A judge is not a king. While kings may also be judges in monarchies, this is not and cannot be true for democracies. Democracies can't afford to have kings, much less in the garb of judges. Our Supreme Court has itself held as much in the Irfan Bashir case. The role of a constitutional judge is different from that of a king, who is free to exert power and pass orders of his choice over his subjects. Yet, we see an increasing tendency among them to indulge in collateral proceedings that might appear to have more to do with their personal opinion than the facts of the cases at hand. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law, reads Article 175(2) of our Constitution. The judge's role, in a constitutional democracy, is that of arbiters and not masters. Even the former role is not absolute but is subjected to certain limitations, including that of jurisdiction. Collateral proceedings distort that role. Indulgence in proceedings or matters not directly before a judge, and which the judge may not even have jurisdiction to preside over, are justifiably frowned upon by some legal experts as going beyond the judiciary's constitutional role in a democratic dispensation. A debate, long overdue, was kick-started by the summoning of the IGP with regard to the firing incident on Imran Khan's Long March by the Apex Court in an unrelated proceeding of contempt against Khan. Reservations surfaced not only among legal quarters but also from within the bench, where one honorable judge had serious jurisdictional reservations. The judge's role, in a constitutional democracy, is that of arbiters and not masters. Collateral proceedings manifest themselves in different scenarios. 1. By giving findings or observations on a matter that has already attained finality. Violation of fundamental rights guaranteed under the Constitution have to be protected, but at the same time, it is the duty of the court to ensure that the decisions rendered by the court are not overturned frequently. That too, when challenged collaterally, this court has an extensive power to correct an error or to review its decision, but that cannot be done at the cost of doctrine of finality. An issue of law can be overruled later on, but a question of fact cannot be reopened once it has been finally sealed, held the Indian Supreme Court in the Major S.P. Sharma case. 2. In collateral proceedings, findings or observations are rendered on a matter that has not yet been initiated judicially by the parties concerned, and which may never be so initiated. For example, if an FIR is not registered promptly or it does not arraign the accused persons as a complainant may wish, statutory remedies of a petition to a justice of peace or filing a private complaint are available. A complainant may or may not have recourse to such remedies, according to legal advice. By passing directions or observations in such a matter, would the Supreme Court not have journeyed into the thicket of collateral proceedings? 3. In collateral proceedings, findings or observations are made on a matter which is not pending before the court, making such findings or observations which, under the law, fall in the jurisdiction of some other forum. The Constitution and different statutes have conferred various jurisdictions on different courts and tribunals. Bypassing other valid constitutional and statutory forums by a court, or taking up a matter in its original jurisdiction, instead of waiting for the appellate jurisdiction to materialize in due course of time, is tantamount to adjudicating on a matter which is not before it. In my humble view, verbal observations or directions to the IGP in Khan's shooting case with respect to registering of an FIR or with respect to service-related matters of the IGP about his resignation or leaving charge have the characteristics of the latter two categories. Further, such proceedings divert attention not only from the case at hand but also from the long queue of cases pending adjudication on the regular docket. Other reasons to avoid such proceedings are the risk of political consequences, unwanted media or public attention, and avoidable criticism of the judiciary by disgruntled sections which such proceedings may spawn. Collateral proceedings, as a result, inevitably end up causing distortions in the judicial system. Conversely, it can be argued that the apex court has the power to do complete justice, and to do so it can take up any kind of matter during any kind of proceedings in any kind of lease, though even Article 187, which empowers it to do complete justice, is qualified by a limitation, valid jurisdiction.
The counter-argument may be that the apex court cannot do complete justice outside the conferred jurisdictions or by conflating different jurisdictions. Additionally, power to do complete justice should be interpreted in accordance with the democratic underpinnings of the Constitution, in the context of the extraordinary requirements that a pending case at hand may have, and not in the context of the person or functions of a judge seen to be assuming the role of a king who can do whatever he likes, without any limitations, including exercising jurisdiction when none exists. The complete justice doctrine, therefore, is not a valid justification of collateral proceedings. To conclude, collateral proceedings can be placed in the same league as suo motu proceedings, verbal directions, judicial overreach, obiter dicta, etc., all of which, in the case of the Supreme Court, have a binding effect. In the midst of a political crisis, open invitations to the Chief Justice of Pakistan or the Apex Court to interfere in matters which are not or could not be directly brought before the court would be better shrugged off. One hopes the court comes out of this crisis unscathed, which is possible if it strictly confines itself to the conferred jurisdictions and refrains from overindulgence in collateral proceedings. The writer is a constitutional and tax lawyer based in Islamabad. Published in Dawn, December 3, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. एक जज एक बादशाह नहीं है। अगरचे बादशाहतों में बादशाह भी जज हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियतों के लिए ये सच नहीं है और ना ही हो सकता है। जमहूरियतें बादशाहों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, जजों के लिबादे में बहुत कम। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खुद इरफान बशीर केस में भी इतना ही फैसला दिया है। आईनी जज का किरदार एक बादशाह से मुख्तलिफ है, जो अपनी रियाया पर अपनी पसंद के अहकामात जारी करने और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उनके दरमियान कोलेटरल कार्रवाई में मुलव्वस होने के लिए एक बढ़ती हुई रुझान है, जो उनकी ज़ाती राय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ मुकदमात के हाथ में ज़ाहिर होता है। हमारे आइन के आर्टिकल 175(2) में कहा गया है कि किसी भी अदालत का कोई दायरा इख्तियार नहीं होगा सिवाय इसके जो इसे आईना किसी कानून के जरिया इसके तहत दिया गया है। आईनी जमहूरियत में जजों का किरदार सालिसों का होता है, न कि आकाओं का। यहाँ तक कि साबिका किरदार मुतलक नहीं है, लेकिन कुछ हुदूद के ताबे है, जिसमें दायरा इख्तियार भी शामिल है। कोलेटरल कार्रवाई इस किरदार को मस्ख करती है। किसी जज के सामने बराह रास्त न होने वाली कार्रवाई या मामलात में मुलव्वस होना और जिनकी सदारत करने का इख्तियार जज के पास भी नहीं हो सकता है, को कुछ कानूनी माहिरीन ने जमहूरी निज़ाम में अदलिया के आईनी किरदार से मावरा करार दिया है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की गैर मुतालिका कार्रवाई में फायरिंग के वाक़े के हवाले से IGP को तलब करके एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा अशारिया बहस का आगाज़ किया गया था। तहफ़्फ़ुज़ात न सिर्फ कानूनी हलकों में बल्कि बेंच के अंदर से भी सामने आए, जहां एक मुअज़्ज़ज़ जज को संगीन दायरा इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ात थे। आईनी जमहूरियत में जजों का किरदार सालिसों का होता है, न कि आकाओं का। कोलेटरल कार्रवाई खुद को मुख्तलिफ मंजरनामों में ज़ाहिर करती है। एक, किसी ऐसे मामले पर नताइज या मुशाहदात देकर जो पहले ही हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने कहा, आइन के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अदालत के जरिए दिए गए फैसलों को बार बार नहीं बदला जाए, वो भी जब इसको चैलेंज किया जाए। इस अदालत के पास किसी गलती को दुरुस्त करने, अपने फैसले पर नज़रसानी करने का वसी इख्तियार है, लेकिन यह हुक्मियत के नज़रिया की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। कानून के एक मसले को बाद में मुस्तरद किया जा सकता है, लेकिन हकीकत का एक सवाल एक बार जब उसे आखिरकार मेहरबंद कर दिया गया है तो उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है। मेजर SP शर्मा केस में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इनेकाद किया। दूसरा, कोलेटरल कार्रवाई में नताइज या मुशाहदात एक ऐसे मामले पर पेश किए जाते हैं जो अभी तक मुतालिका फरीकों की तरफ से अदालती तौर पर शुरू नहीं किया गया है और जो कभी भी इस तरह शुरू नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर FIR फौरी तौर पर दर्ज नहीं की जाती है या ये मुल्जिम अफराद को शिकायत कुनिंदा की ख्वाहिश के मुताबिक पेश नहीं करती है,
तो अमन के इंसाफ के लिए दरख्वास्त निजी शिकायत दर्ज करने के कानूनी इलाज दस्तयाब हैं। कानूनी मशवरे के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के पास इस तरह के इलाज का सहारा हो सकता है या नहीं। इस तरह के मामले में हिदायत मुशाहदात मंजूर करके क्या सुप्रीम कोर्ट कोलेटरल कार्रवाई के गड़े में सफर नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि कोलेटरल कार्रवाई में ऐसे मामले पर नताइज या मुशाहदात किए जाते हैं जो अदालत के सामने ज़ेर इल्तिवा नहीं है। ऐसे नताइज या मुशाहदात करते हैं जो कानून के तहत किसी दूसरे फोरम के दायरा इख्तियार में आते हैं। आइन और मुख्तलिफ कवानीन ने मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स को मुख्तलिफ दायरा इख्तियार तफवीज़ किए हैं। किसी अदालत की तरफ से दीगर जायज़ आइनी और कानूनी फॉर्म्स को नज़रअंदाज करना या किसी मामले को इसके असल दायरा इख्तियार में ले जाना बजाय इसके के वक्त के साथ साथ अपीलेट दायरा इख्तियार के नाफिज अलमल होने का इंतज़ार किया जाए, किसी ऐसे मामले पर फैसला करने के मुतरादिफ है जो इसके सामने नहीं है। मेरी आजिज़ाना राय में खान के फायरिंग के मामले में आईजीपी को एफआईआर दर्ज करने, आईजीपी के इस्तीफ़ा चार्ज छोड़ने के बारे में सर्विस से मुताल्लिक मामलात के सिलसिले में ज़बानी मुशाहदात हिदायत मुअख्खर ज़िक्र दो ज़ुमरों की खुसूसियात हैं। मज़ीद बरा इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ हाथ में मौजूद केस से तवज्जो हटती है बल्कि बाकायदगी से डाकेट पर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की लंबी कतार से भी तवज्जो हटती है। इस तरह की कार्रवाइयों से बचने की दीगर वजूहात में सियासी नताइज का खतरा, नापसंदीदा मीडिया, अवामी तवज्जो और नाराज तबकों की तरफ से अदलिया पर काबिल एतराज़ तनकीद शामिल हैं जो इस तरह की कार्रवाई को जन्म दे सकती है। इसके नतीजे में कोलेटरल कार्रवाई लामहला अदालती निज़ाम में बिगाड़ का बाइस बनती है। इसके बरक्स ये दलील दी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार हासिल है और ऐसा करने के लिए वो किसी भी किस्म की कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म के मामले को ले सकता है। हालांकि आर्टिकल 187 जो उसे मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार देता है, एक हद के जरिया अहल है जायज़ दायरा इख्तियार। जवाबी दलील ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट तफवीज़ करदा दायरा इख्तियार से बाहर मुख्तलिफ दायरा इख्तियार को जोड़कर मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकती। मज़ीद बरा मुकम्मल इंसाफ करने के इख्तियार की तशरीह आइन की जमहूरी बुनियादों के मुताबिक की जानी चाहिए। इन गैर मामूली तकाज़ों के तनाजुर में जो एक ज़ेर इल्तिवा अशारिया केस के पास हो सकते हैं, न कि इस शख्स या जज के अफ़ाल के तनाजुर में जो एक बादशाह का किरदार अदा करते हुए देखा जाता है, जो चाहे कर सकता है बगैर किसी हुदूद के, बशमूल दायरा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए जब कोई मौजूद ना हो। लिहाजा मुकम्मल इंसाफ का नज़रिया कोलेटरल कार्रवाई का जायज़ जवाज़ नहीं है। नतीजा अखज़ करने के लिए कोलेटरल कार्रवाई को उसी लीग में रखा जा सकता है जैसे सुमोटो कार्रवाई, ज़बानी हिदायत, अदालती हद से तजावुज़, ओबिटर डिक्टा वगैरह, जिनमें से तमाम सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक पाबंद असर है। सियासी बहरान के दरमियान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलात में मुदाखलत की खुली दावतें जो बराह रास्त अदालत के सामने नहीं लाई जा सकती या नहीं लाई जा सकती, बेहतर होगा कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। उम्मीद की जा सकती है कि अदालत इस बहरान से बाहर निकल आएगी, जो इस सूरत में मुमकिन है जब वो अपने आप को तफवीज़ करदा दायरा इख्तियार तक सख्ती से महदूद रखे और कोलेटरल कार्रवाई में हद से ज़्यादा मुदाखलत से गुरेज करे। मज़मून निगार इस्लामाबाद में मुकीम आइनी और टैक्स वकील हैं। डान अखबार में शाये शुदा 3 दिसंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.